Gopijana Vallabha Giri Vardhani Yasodanandana Raja Janaranjanaya Yasodanandana Raja Janaranjanaya Yamuna Tira Helvani Jahani Yamuna Yamuna Tira Helvani Jahani Yamuna
ki jai. So welcome everyone to today's session. How is everyone? Haribol. So let's give a round, big welcome to His Holiness Charan Swami with 3 loud Haribols. Haribol! 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 So I guess we'll begin. So today we are examining, does anyone know what day it is today? Valentine's Day. Haribol. Today is the festival of Valentine's. We had Nityananda Appearance Day this week, and now we have Valentine's Day, another important festival in our Vaishnav calendar. So it's interesting, we are here at Ujjain temple, and the deities are Radha, Madan, Mohan. Anyone know what deities Radha, Madan, Mohan, what's the main essence that they represent? Huh? Oh, we need translation. Okay. Sorry. Low. Yeah. हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही आज वैलेंटाइंस डे है, जैसा कि सबको पता भी इसी हफ्ते हमने Just to clarify, there is a saint called Saint Valentine, who is a Christian saint. So this is how the name was given. This is his appearance day of Saint Valentine. Somehow it got turned into some kind of festival of amorous affection on the material platform. तो ये जो वैलेंटाइंस डे है, एक संत थे सेंट वैलेंटाइन्स, उनके नाम पे मनाया जाता है, लेकिन किसी प्रकार से ये प्रेममय संबंध को स्थापित करने के लिए मनाया जाने लगा। लेकिन आज उनकी आविर्भाव तिथि है, सेंट वैलेंटाइन। So it's not about a little baby flying around with wings shooting arrows at you. That is somebody's imagination. तो ये Bambino. तो ये किसी बच्चे का ऐसे बाहर जाके ऐसे धनुष बाण तीर चलाने के जैसा नहीं है। It's not about some baby shooting arrows at you, and then you fall in love. ये ऐसा किसी बच्चे का बाहर जाके तीर चलाने जैसा नहीं है, जिसके बाद आप प्रेम में पड़ जाओ। So get away from the material conception of Valentine's Day. It's actually in honor of a very exalted Christian saint whose name was Valentino. तो आप किसी प्रकार की जो भौतिक धारणा है वैलेंटाइन के बारे में, उनसे आप मुक्त हो जाइए। एक बहुत ही जाने माने वैलेंटिनो, उनके सम्मान में ये तिथि मनाई जाती है। So Haribol. So we will now discuss about love and reawakening love. अभी हम प्रेम के बारे में और प्रेम को कैसे जागृत करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। So often people think that we have to find love, we have to build love, we have to search for love. But actually today we'll discuss how love is already within us and how we can reawaken that divine love. तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि हम प्रेम का कैसे विकास करें, प्रेम को कहाँ खोजें, लेकिन प्रेम हमारे अंदर ही निहित है और आज हम उसको चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उसको हम जागृत कर सकते हैं। So we'll just begin. Not working? Just have to, there's a little click, is it plugged in? Yeah, that thing's really plugged in. There, if you could just move it on this side, that, yeah, that little receiver. Thank you. So we'll just begin with some gratitude, and what I'd like you to do is just close your eyes and think of someone that you're really grateful for in your life. तो अभी हम अपना मंगलाचरण या फिर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, जो भी हमको जिसके प्रति हमारे अंदर बहुत ही श्रद्धा का भाव है उसका स्मरण करते हुए। Om Gyan Timidandasya
Gyananjalashalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Safitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Adati Swadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sahagrajatam Sahagana Lalita Shri Tam Sajivam Savaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Ritash Vishakanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. So today we'll try and awaken that love, that divine love that's within us, and hopefully we can share something where we can really try and see love everywhere. हाँ, तो आज हमारे भीतर जो प्रेम है उसको जगाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप इसको समझ सकेंगे और देख सकेंगे. So, a very famous saint named Vishwanath Chakravarti Thakur explains the concept of the Bhagavad Gita to have three levels, and he gives an analogy of the jewel box. तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक उपमा का प्रयोग करते हैं. आप कोई ऐसा डिब्बा जिसमें मणि रखी रहे उसके उपमा के माध्यम से क्या आप समझ सकते हैं? So the foundation of that jewel box is the yoga of success, and that's what we get for the first 6 chapters. And he explains that the first 6 chapters of the Bhagavad Gita are all about how to live. तो ये जो ये डिब्बा है मणि रखने का, उसका जो आधारशिला है वो जो कर्म योग है उसके बारे में है. And the middle of that jewel box, which is the most precious part, is love. और जो उस डिब्बे का जो बीच वाला भाग है वह प्रेम है जो सबसे कीमती है. And what protects that jewel box is the yoga of wisdom, Jnana Yoga, which is the final 6 chapters. और जो उस डिब्बे को, उस मणि को सुरक्षित रखता है वह है ज्ञान योग. So what is the most important part of this jewel box? तो इस डिब्बे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? Beachvara, yeah. So the part in the middle is the most important, which is the Bhakti Yoga. तो इसमें जो बीच का जो भाग है वो सबसे कीमती है, जैसे कि भक्ति योग. So our philosophy is based on Bhakti Yoga. तो हमारा जो सिद्धांत है वो भक्ति योग पर ही आधारित है. So it's very important we understand what love actually means and how we connect with Krishna or divinity through love. तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रेम को समझें और हम किस प्रकार से कृष्ण से जुड़ सकते हैं. So let's I'm going to take a poll, a quiz now, so you can raise your hands when I ask the question. अभी आप लोग अपना हाथ उठाएंगे जब मैं प्रश्न पूछूंगा. So how many of you are looking for love? आप में से कितने लोग प्रेम की तलाश में हैं? कितने लोग प्रेम की तलाश में हैं? Okay, how many of you are in love? और कितने लोग पहले से ही प्रेम में हैं? Crazy in love. प्रेम में पागल हो चुके हैं, ऐसा कोई जो प्यार में पागल हो गया? Okay, how many of you are trying to
avoid someone that loves you, maybe by ghosting them, or और कितने लोग ऐसे हैं जिनसे कोई पहले से प्यार करता है लेकिन आप उनसे बचना चाहते हैं? okay. How many of you are in a relationship but want to get out of love? आप में से कितने लोग अपने संबंध में हैं लेकिन आप उस प्रेम से हटना चाहते हैं? He's saying that I have to go home. I have to go home back. It's okay. We will next time close the lights and then ask people to raise their hands, and then people will be honest. अगली बार लाइट बंद करके ऐसे प्रश्न पूछेंगे. I can see all the Prabhujis laughing here because they don't want to give the honest answer. तो यहाँ पे सारे प्रभु जी लोग हंस रहे हैं क्योंकि वो ईमानदार उत्तर नहीं बता रहे. So, see, most of us think that love is in two categories. The first is physical love. तो लोग समझते हैं कि जो प्रेम है दो श्रेणी का होता है. पहला है कि भौतिक, फिजिकल. So, they're my family, or that's my wife, or I'm attracted to them. There's a blood relation. So there's a physical definition of this is why I love someone. तो जैसा पहला भौतिक है जिससे हमारा परिवार, पत्नी या फिर जिनसे हमारा खून का संबंध है उनसे. Or maybe even somebody that's close to us. They live next to us, maybe in the same ashram as us also. या फिर हमारे कोई आस पड़ोसी आश्रम का रहने वाला. And another type of love that we have is emotional. Like that person makes me feel happy when I see them. That person gives me satisfaction. That person says nice things about me. So on a mental level, emotionally, they give me satisfaction. Therefore, I love them. तो दूसरा है जो भावना से संबंध है प्रेम. तो ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें साथ रहने पे हमें खुशी देता है, हमें संतुष्ट करता है, मानसिक रूप से हमें प्रसन्न रखता है. But Krishna in the Bhagavad Gita, he explains that these two categories of love is not actually love. लेकिन कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि ये जो दोनों प्रेम की श्रेणियां हैं ये प्रेम नहीं है. Actually, this is defined as lust. दरअसल इसको काम कहते हैं. What Krishna explains in the Gita is actually love is something that's spiritual. भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि प्रेम आध्यात्मिक होता है. And spiritual love goes beyond the physical and the emotional. और ये जो आध्यात्मिक प्रेम होता है ये शरीर और भावना इन दोनों के परे होता है. And to give the definition of love, Krishna explains that we have to categorize love in 3 ways. और इस प्रेम की परिभाषा देने के लिए भगवान बोलते हैं इसकी 3 श्रेणियां हैं. The first one is what's our vision of a person. पहला ये कि उस व्यक्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है. So how do I see them? Do I see them as a part and parcel of Krishna? कि पहला है कि हम उनको कैसे देखते हैं. क्या हम उनको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं? Or do we just see them as somebody that's just a material person that I have an interactive exchange with? या फिर हम उनको कोई भौतिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिनके साथ हमारा आदान प्रदान चल रहा है. The second definition given is what's the role of that person in my life? और दूसरा है कि उस व्यक्ति की मेरे जीवन में क्या भूमिका है. Is their role to help me grow spiritually and connect with Krishna deeply? क्या उसका जो किरदार है वो मुझे आध्यात्मिक रूप से उठाने में और कृष्ण से जोड़ने के संबंध में है? Or is it to become more materially enjoying senses? या फिर वो उसका जो संबंध है मेरे साथ वह इंद्रिय तृप्ति का है. And ultimately, the last definition of how we understand if something is spiritual or not is what is the goal of that relationship? और जो तीसरा है वो ये है कि हमारे जो संबंध है उसका लक्ष्य उसकी गति क्या है. Is the goal to serve and help me become a better person, or I help them become a better person in service, in connecting with Krishna, in growing spiritually, growing my connection?
तो ये जो लक्ष्य है, क्या ये सेवा भाव का है कि वो हमारी सहायता करेंगे कि हमें मेरा सेवा भाव बढ़े, या फिर मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ जिससे वो भक्ति में प्रगति करें? So everyone here can evaluate their relationships and review them in these three categories, and then you will know whether your love for that person is based on physical, emotional, or spiritual. And looking at these three, what's the vision, what's the goal, what's the role, and what's the goal. तो आप सभी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो आपके जो भी संबंध है उसमें प्रेम को इस प्रकार से देख सकते हैं इन तीन श्रेणियों के हिसाब से, और उस हिसाब से आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपका जो प्रेम है वह भौतिक है या फिर भावना से जुड़ा है या फिर आध्यात्मिक है. So let's look at the difference between karma, lust, and prema. तो काम और प्रेम में अंतर देखते हैं. So when we have a lustful relationship, it's all about taking. काम का अर्थ है कि हमारे अंदर सिर्फ स्वीकार करने की भावना रहती है. Whereas true love is about giving. लेकिन जो प्रेम है उसमें देने की भावना होती है. So always real love is about, the consciousness is always about how can I give to that person. जो प्रेम में भावना रहती है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को कैसे कितना ज्यादा दे सकता हूँ. When we're in lust, we have expectations. We want things. We are expecting a certain standard. We're expecting a certain appreciation, a certain service, a certain thing from this person. तो जो ये काम होता है इसमें हमारी आशा रहती है कि हमें सामने वाले व्यक्ति से कुछ सराहना चाहिए, कुछ सेवा चाहिए या फिर कुछ वस्तु चाहिए. Whereas real love is about appreciating the qualities, what they do for you, and overlooking any negativity or anything they haven't done, but actually glorifying and appreciating what they have. तो ये जो प्रेम है इसमें सामने वाले व्यक्ति को सराहना करने की भावना रहती है, उनके जो गुण हैं, उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया है, उनकी गलतियों को छोड़ के उनका गुणगान करने की भावना. Lust often degrades our consciousness. जो काम है हमारी चेतना का पतन करा देता है. Whereas love elevates our consciousness. प्रेम हमारी चेतना में उन्नति लाता है. And lust is often, we're looking for the immediate result. We're looking for the immediate gain or the immediate satisfaction. और प्रेम काम में हम एकदम तत्कालीन संतुष्टि और लाभ देखते हैं. Whereas in love, we are trying to cultivate something that's long lasting. और प्रेम में दीर्घकालीन परिणाम की तलाश रहती है. And ultimately, if a relationship is based on lust, then it will wither, it will not last, it will fade away. ये जो काम पे आधारित संबंध हो क्षणभंगुर होते हैं, ज्यादा नहीं चलते. And if it's true love, then the love will blossom. और ये जो वास्तविक प्रेम है वह कली की तरह खिलता जाता है. There was a student who asked his teacher, how can I differentiate between love and lust? एक विद्यार्थी ने अपने शिक्षक से पूछा, मैं काम और प्रेम में कैसे अंतर कर सकता हूँ? And she replied, I can give you an example of how you treat this rose flower. और उन्होंने उत्तर दिया कि इससे पता चल जाएगा कि आप ये जो गुलाब का फूल है उसके साथ कैसा आप बर्ताव करते हो. So if you pluck the flower, smell it and enjoy it, then you are very much thinking in lust. तो यदि आप गुलाब का फूल तोड़ते हो, सूंघते हो, इसका भोग करते हो, तो इसका मतलब आप काम की भावना है. But if you love that flower, then you will water it, you will protect it, and you will nurture it. तो अगर आप इस फूल के साथ प्रेम में हो तो आप इसके पौधे में पानी डालोगे, इसका पोषण करोगे और इसकी सुरक्षा करोगे. Obviously in this temple, the flowers smell so beautiful that everybody here takes care of the flowers and nurtures them, and you can see how fragrant the flowers here are in Ujjain. तो आप यहाँ पे उज्जैन मंदिर में देखते हैं कि यहाँ के जो फूल है वो कितना सुगंधित है. तो यहाँ पर लोग वास्तव में जो पौधे हैं उनको बहुत ही अच्छे से पोषण देते हैं और सुरक्षित रखते हैं. So ultimately, spiritual love is defined as bhakti. जो आध्यात्मिक
प्रेम है उसको भक्ति के नाम से जाना जाता है. Often we love only people in our family. अक्सर हम लोग सिर्फ अपने परिवार वाले लोग को ही प्यार करते हैं. And sometimes, if you're lucky, you might love people as your friends or your colleagues. तो अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपके अच्छे मित्र भी हो सकते हैं और सहपाठी भी हो सकते हैं. Rarely do we love strangers. मुश्किल से ही हम किसी अजनबी से प्रेम करते हैं. Has anybody fallen in love with a stranger before? कभी कोई अजनबी से किसी से प्यार हुआ है? Or anyone love a random person on the street, just feel affection for them? या फिर किसी ऐसे सड़क पे किसी भी आदमी को देख के व्यक्ति को देख के किसी को किसी से प्यार हुआ है? Or does everyone here or anyone here love all living entities? और यहाँ पे क्या कोई पुराने जमाने के लोगों को से किसी ने प्यार किया है? Like all living entities, like animals, all living entities. अच्छा, all living entities. Subjivas. कोई ऐसे क्या यहाँ पे कोई ऐसे जो सभी जीवों से प्रेम करता है? See, or does anybody here love the earth? कोई पृथ्वी से प्यार करता है? No one. Today we went to the school, Avanti school, and I asked them, what's your least favorite subject? And they said, the environment. आज मैं अवंती स्कूल में गया था, मैंने से पूछा सबसे कम अच्छा आपको कौन सा विषय लगता है? उन्होंने कहा कि पर्यावरण. So this is interesting. Nobody loves the earth. तो ये रुचिकर है कि जान के कि कोई पृथ्वी से प्रेम नहीं करता. But the interesting thing is, if we have love for Krishna, if we have love for the divine, then we can love all of these things. तो तथ्य ये है कि अगर हमें कृष्ण से किसी दैवी शक्ति से प्रेम है तो हम इन सारे तत्वों वाले व्यक्तियों से प्रेम कर सकते हैं. Because we are seeing everything as part of Krishna's. क्योंकि हम सभी वस्तु को कृष्ण का हिस्सा करके देखते हैं. So that is the result of having love for Krishna, is you end up loving all of these things. तो कृष्ण से प्रेम करने का ये परिणाम है कि आप सबसे प्रेम करते हैं. And therefore, your love expands. इसलिए आपका जो प्रेम है वह विस्तार करता जाता है. And now I'm going to discuss 3 verses from the Bhagavad Gita. ये भगवद गीता से 3 श्लोकों पे हम चर्चा करेंगे. So the first one, can I get maybe a volunteer to read it out, or no? कोई श्लोक को पढ़ेगा जो स्क्रीन पे दिख रहा है? The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Partha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from them." तो ये भगवद गीता का श्लोक है कि भगवान कह रहे हैं कि हे पिता पुत्र, तुम ये सुनो कि किस प्रकार से अगर कोई पूर्ण रूप से मेरी चेतना में रहकर योग का अभ्यास करता है, उसका मन मेरे में आसक्त रहता है, तो असंशय वह मुझको पूर्ण रूप से जान सकता है. So the beginning part of falling in love with divinity, with Krishna, with God, is knowing about him. तो जो प्रारंभिक स्तर है भगवान से प्रेम करने का वह है उनको जानना. We have to know the relationship, and we have to know about that person if we want to fall in love with them. तो हमें उस व्यक्ति के बारे में जानना है जिसे हम प्रेम करना चाहते हैं. What does he like? What does he eat? What does he do? उनको पसंद क्या है, वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, What are his qualities? उनके गुण क्या हैं. And only then we can start to fall in love with Krishna or with God. तभी हम कृष्ण या फिर भगवान से प्रेम कर सकते हैं. Then we have to understand what is the practice of that love. What do we do? What is the activities performed? तो हमें जानिए कि ये जो भक्ति, ये जो हमें प्रेम करना है उसके लिए अभ्यास क्या करना है. Would anybody like to read this verse? If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. Anybody want to say the Sanskrit? इसको संस्कृत में श्लोक कौन सा है? All the children. सारे बच्चे बोल रहे हैं. See, in this verse, it's really amazing because Krishna is saying
it doesn't matter what you offer me. It doesn't matter what you give. Love can be spontaneous. Love can be unconditional. तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझको क्या अर्पित करते हो, प्रेम आपका स्वाभाविक हो सकता है. And also, love for God can be for anyone. और ये जो भगवान के लिए जो प्रेम है वह किसी के लिए भी हो सकता है. Because Krishna is saying, I will accept. क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वीकार करूंगा. It's like when a child draws a painting of their mom and dad with the house. Now the painting is not very nice if you look at it artistically, but the mother is so appreciative of it that the child has done something. तो जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा का उनके घर के साथ एक तस्वीर बनाता है, तो चित्र भले ही कोई अच्छा नहीं हो, आप देखेंगे चित्रकला के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी माँ जो है उसकी बहुत प्रशंसा करती है कि बच्चे ने कुछ तो किया. So the main point of this verse is we're understanding that love is not about how big or what the action is. Love is actually about how we give. Love is actually about the intention rather than the actual act. Rather than what we're doing, it's about the intention and the mood we do it with. तो प्रेम के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि प्रेम वास्तव में वो उस क्रिया के बारे में नहीं है, बल्कि उस भाव के बारे में है जिस चेतना से हम वो काम कर रहे हैं. And finally, this verse from the Bhagavad Gita, which talks about what is the perfection of that love. और फिर इसमें प्रेम के लिए जो परिणाम है वो बताया गया है. Would somebody like to read this verse? To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. हाँ, तो जो लोग सतत रूप से मेरी सेवा करते रहते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके. So we're going to unpack this verse in more detail. तो हम इस श्लोक पे थोड़ा और ज़्यादा विस्तृत वर्णन कर सकते हैं. In a second. So let's just recap the lessons of love that we can understand. Often we're told love is random; it just happens by chance. कभी लोग जो कहते हैं जो प्रेम है वह ऐसे ही अनजाने में हो जाता है. Same with devotion. वैसे ही भक्ति के बारे में भी है. So actually, love is intentional. We can actually perform actions and do things to create a loving relationship. लेकिन ये जो प्रेम है हमारे स्वभाव पे आधारित होता है, जिससे हम ऐसा पर्यावरण विकसित कर सकें कि हम प्रेम कर सकें. Often we're told love is just a feeling, whether you like it or don't like it. You're in love or you're not in love. तो कभी-कभी हमको लगता है प्रेम हमारी सिर्फ ऐसे भावना के बारे में कि हमें ये पसंद है नहीं पसंद है. Actually, love is an action. Love is something that you give, something that you do, something that you give a part of your heart. लेकिन जो प्रेम है ये क्रिया है, जब आप कुछ करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, कुछ देते हैं. So when we give a part of our heart to Krishna, that is actually an action and it's done through devotional service. जब अपने हृदय का कुछ हिस्सा यानी कि अपनी कोई प्रिय वस्तु अर्पित करते हैं कृष्ण को, तो ये भक्ति का एक हिस्सा है कि कृष्ण को दे दिया. Often we say that love requires interaction. हम ऐसा ये कहते हैं अक्सर कि जो प्रेम है उसमें आदान प्रदान होने चाहिए. So you have to spend lots of time with that person. You have to spend a lot of physical presence. तो ऐसा लगता है कि हमें उस व्यक्ति के साथ बहुत सारा समय बिताना है, उनका बहुत ज़्यादा भौतिक संग चाहिए. But actually, love is connection. So it's not about how much time you spend. It's about the quality and attention you give that person when you spend that time. तो ये प्रेम एक संबंध है, इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके साथ कितना समय बिताते हो, बल्कि आपका उस व्यक्ति के साथ कितना ज़्यादा प्रेम में संबंध है और आप उसके गुणों की कितनी ज़्यादा सराहना करते हैं. So you can spend 1 hour in front of Radha Madan Mohan and be thinking about 100 different things. ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 घंटा राधा मदन मोहन के सामने खड़े हो जाएं, लेकिन फिर भी 100 बातें दिमाग में सोचते रहें. Or you can spend 1 minute in front of Radha Madan Mohan and just think about them and them only. या फिर ऐसा भी हो सकता है राधा मदन मोहन के सामने 1 मिनट ही रहें, लेकिन दिन भर आप उन्हीं के बारे में सोचते रहें. Often it's said love requires chemistry. कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रेम एक रसायन है. But actually,
love requires commitment. लेकिन जो ये प्रेम है यह एक प्रकार से आत्मसमर्पण है. There's a funny story about me and Maharaj. Once we had a conversation, and maybe I'll share it in a second. तो मेरी और महाराज की एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो मैं भी बताऊंगा. Shall I share it at the end? Maybe. बाद में बताऊंगा. Share it now. I don't know what you're going to say. So, okay, let me finish this and I'll share. So, actually, we think that love is binary. जो प्रेम है जोड़ों में ही होता है. But actually, love unfolds in stages. लेकिन जो प्रेम है ये एक स्तर के बाद एक स्तर अपने आप प्रकट होता जाता है. So the more you get to know someone, the deeper you form that connection. जितना ही आप निकट से व्यक्ति को जानना चालू कर देते हैं उतना ही आपके संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं. In the West or in the media, we're told love is blind. मीडिया में और पश्चिमी देश में हम ऐसा बताते हैं कि प्यार अंधा है. Who used to believe love is blind? कितने लोग कहते हैं कि प्यार अंधा है. But actually, love is fully aware. लेकिन जो ये प्रेम है ये पूर्ण जागृत अवस्था है. So having full consciousness of that person, having full consciousness of what you're doing, is being fully aware. This is what is called being conscious in love, being Krishna conscious. तो ये जो पूर्ण रूप से जागृत रहना यानी कि सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, उनको क्या पसंद है, इसको प्रेम कहते हैं, इसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं. Often people and often us, we're stuck in this red category, but really we want to move and understand love in this yellow segment. तो यहाँ पे जो ये लाल वाला डिब्बा था, अक्सर हम उस वाली श्रेणी का प्यार समझते हैं, लेकिन हमें एक पीले वाले डिब्बे की तरफ जाना है. What does binary mean? Binary means like it's either you're in love or you're not in love. Whereas love is more of, it happens in stages, so it evolves rather than you're in it or you're not in it. जो प्रेम है बाइनरी होता है. बाइनरी का अर्थ है कि या तो होता है या तो नहीं होता है, ऐसा कोई विकल्प हो. So we're going to discuss this verse in a bit more detail, and I'm going to open up to Maharaj as well to share. This verse from 10.10, it says, "To those who are constantly devoted to serving me with love, I give them the understanding by which they can come to me." तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो लोग सदैव निरंतर प्रेम से मेरी सेवा करते रहते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूँ जैसे वो मेरे तक आ सके. And I'm just going to focus on these two words, constantly devoted. तो इस दो शब्दों पे हम चर्चा करेंगे कि सतत रूप से भक्ति के माध्यम से. So what does that mean, constantly devoted? तो constantly devoted इसका अर्थ क्या है? So devoted, how do we practice devotion? Devoted यानी कि हम भक्ति का अभ्यास कैसे करते हैं? So there's 9 stages of love, 9 practices of love. तो ये भक्ति करने के 9 अंग हैं. And how do we practice them 9? Do you want to swap chairs, March? How do we practice that constantly? और हम इनका सतत रूप से कैसे अभ्यास कर सकते हैं? And there's 2 words that we can use, ahoitaki, और इसके लिए 2 शब्द हैं, अहेतुकी, which means spontaneous, स्वाभाविक, and unmotivated, और बिना किसी दूसरी इच्छा के, and aparata, अप्रतिहता, which means to constantly, consistently. इसका मतलब है सदैव निरंतर. So bhakti is performed with these 2 categories, these 2 attributes. तो भक्ति की 2 गुण हैं. So having the right attitude, which is unmotivated and consistent. तो ये स्वभाव रहना कि निरंतर रूप से चलेगी और बिना किसी इच्छा, दूसरी अन्य इच्छा के. And performing the 9 practices of devotional service, the 9 angas in this attitude. और दूसरा स्वभाव ये है कि भक्ति के 9 अंगों का अभ्यास करना है. If we can do these 2 things, अगर हम ये दोनों चीजें करें, Krishna says, I give the understanding by which they can come to me. तब कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको बुद्धि देता हूँ जिससे आप मेरे पास आ सको. So this is our endeavor for love.
तो ये हमारा प्रयास है प्रेम के लिए, and then Krishna gives his endeavor for that love. और फिर कृष्ण अपना परिणाम देते हैं उस प्रयास के लिए. So that's our. I'm going to bring in Maharaj now, and that's our idea of reawakening love. Tell your story. So I'm just going to refer to the slide of feeling love, and I was very much in this red category. तो अभी इसी स्लाइड में फिर से आ गए और मैं जो है एक्चुअली लाल वाले डिब्बे में ही आ जाता हूँ. So once Maharaj was trying to suggest one potential marriage partner for me. तो एक बार महाराज मेरे लिए एक अच्छी वधू चयन कर रहे थे. So I said I was not feeling it. मैंने बोला कि मेरे मन में उनके प्रति कोई भाव नहीं है. So Maharaj said, "Oh, I know what you're looking for." महाराज ने कहा, ओह मुझे पता है कि तुम किसकी तलाश में हो. He said, "You're looking for a Apsara from the heavenly planets." तुम किसी अप्सरा जो कि स्वर्गलोक से आई उसकी तलाश में हो. So I was driving my car at the same time because I was driving Maharaj, and I was laughing for 5 minutes straight. और फिर उसमें महाराज को नहीं छोड़ने जा रहा था, अपनी कार चला रहा था, तो मैं लगातार 5 मिनट तक हंसता था. He was going to the heavenly planet. उसमें कार चला के स्वर्गलोक जा रहे थे. So yeah, Maharaj, we'd like to open up to you. What's your understanding or comments, definitions of love, and maybe you could share. Maybe before I say anything, I think Raj Mukund Prabhu really gave a lot of information and from the different angles of vision, both from the material perspective and the actual reality of love, and so many detailed points. So I was thinking maybe devotees wanted to ask some questions based on what he's said, which will be still fresh in your mind. तो इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं कहना चाहूँ कि जो श्रीपाद राज मुकुंद प्रभु हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये प्रेम पे अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि भौतिक प्रेम क्या है और वास्तव में सत्य क्या है, इसका बहुत ही विस्तृत रूप से इन्होंने चर्चा किया है. तो आप में से यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे, क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में सब कुछ बातें ताजा होंगी, तो अभी आप पहले प्रश्न पूछ सकते हैं. So, like sometimes we have seen on the third point, which says love requires interaction and love requires connection. Sometimes when we have devotees and we love some devotees, but sometimes they are in some very important situation and we are not there to give time to them. So they are actually angry or they don't feel like he is not giving me time. I might be connected with him when I am far, but at that time they want us to be there. So how can we understand this question? तो कोई प्रश्न है कि जो तीसरा पॉइंट है उससे संबंधित प्रश्न है. तो उन्होंने ये जानना चाहते हैं कि कभी-कभी भक्तों को हमारी जरूरत पड़ती है, लेकिन हम उनको समय पे काम नहीं आ पाते. तो हम उनसे दूर रह के भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो अभी हमें उतना महत्वपूर्ण अपना नहीं दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं. I would say the best example of somebody who is loved or who loved with connection rather than interaction is Bhakti Charu Swami. तो जो सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जो प्रेम है इसमें बहुत ही लंबा आदान प्रदान नहीं, सिर्फ एक संबंध चाहिए, उसका अच्छा उदाहरण है परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज. The stories we hear about him, how he would be so attentive and sensitive and personal with the people. And I was hearing stories how, he would really pray for someone or give them time, give them connection. And when you really want to serve someone or show them, it's like I mentioned, it's about the little things, or it's about the heart that you can give. And the quality that you can give them. I know it's difficult because often people have an expectation, but
something small, something sweet that comes from the heart, they will feel it. हाँ, तो जैसे कि महाराज का जो उदाहरण है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ जो उनका संबंध उसके प्रति बहुत ही जागरूक, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही व्यक्तिगत रूप से रहते थे। वो किसी भी व्यक्ति के लिए उन प्रार्थना करते थे, उनके साथ संबंध स्थापित करते थे। और हम देखते हैं कि अगर हम किसी का वास्तव में किसी की सेवा करना चाहें, तो अगर हम उनके लिए छोटी सी भी चीज करें हृदय से, तो उनके तो क्योंकि हम देखते हैं साधारणतः लोगों को हमसे कुछ आशा रहती है, लेकिन अगर हम उस समय उनके लिए छोटी सी भी चीज करते हैं तो उसके प्रति वो बहुत ही कृतज्ञ रहते हैं। Maharaj, would you like to add anything to that, or In relationship to that question? No, I think you covered the essential question. does that answer your question? I think that's work in progress. I have to feel it. Yes. I don't get the point when it feels like love is binding and love unfolding stages. Could you please explain that? Yes. See, do you want to repeat the question? पांचवें पॉइंट को एक्सप्लेनेशन मांग रही है माता जी। See, पांचवा पॉइंट है कि लव इज बाइंडिंग, या तो होता है या तो नहीं होता है। और दूसरा ये कि जो प्रेम है एक क्रम के बाद क्रम में खुलता जाता है। okay, so let's take an example of a married couple. तो जैसे कि एक विवाहित जोड़े का उदाहरण लेते हैं। See, some people, they base their relationship of, I'm in love or I'm not in love. तो वो जो अपना संबंध है इस हिसाब से आता है कि क्या मैं उससे प्रेम में हूँ या नहीं हूँ। But actually, if we look at it, if we look at a long relationship with a married couple, or a long relationship in any relationship that you have, it's not a case of yes, I'm in love or no, I'm not in love. It's often you're knowing more and more about that person. You're getting to have different experiences with them. You're getting to go through different ups and downs with them. And still you love that person. You're still evolving, getting to know them more. You're serving together. You're knowing each other's flaws. You're knowing each other's positives. And by doing that, and your love grows. So it unfolds at different stages. Let's say a couple that's married for 1 year versus a couple that's married for 50 years. The things that they love about each other for the first year is going to be different with what they're going to love after 50 years, right? It's going to be much more deeper. Now let's take the example of Krishna. Our love for Krishna, right? Because that's maybe universal here. See, it's not that we come to the temple and we just love Krishna straight away, right? Did you love Krishna when you came straight away? Did anyone here love Krishna straight away when they came? If you did, then you should give the class. It unfolds over time. The more we get to know Krishna, not only Krishna, but the more we get to know his devotees, the processes of bhakti, it really unfolds. And actually Krishna is alive in our life. So Krishna then brings certain interactions, certain situations that we then understand, like what he is for us. What does he mean for us? So it's an evolutionary process of unfolding of love, it's not just you're in it or not, or it's not something that just happens instantly. Because often that's the thing. And you see sometimes in the West we have, not just the West, and all over the world we have a lot of people not staying married anymore, right? People divorce very quickly, or they break friendships very quickly, or they break relationships very quickly, or they leave their parents very quickly. Like recently I saw something on Instagram, not that I spend that much time on Instagram, but there was IIT Baba, I just heard of him, and he was like, yeah, you shouldn't love your parents, that's just so crazy, like, loving parents is all nonsense and stuff. And but actually like the relationship with your parents, it evolves over time. It's not that you just don't love your parents anymore. Like, oh yeah, like they did something, I don't love them anymore. No, that's not the point. The point is that over time, you
you develop the relationship with them, and you take the good and the bad, right? That's what love is about. It comes in stages, and sometimes, yeah, like they're going to be going through a difficult time, but you have to be there for them. You might be going through a difficult time, so you have to look at the long-term vision and the stages of love that unfold. And any relationship you look at, even with your friends, your family, even like maybe some of your university friends or you grew up with, there was a stage like you first met each other, then you spent time with each other. Maybe now you're away, but you still love each other, or you do different things together. So like that, it's it's a thing that grows and grows and grows, and even up until your deathbed. When you're dying, you're going to have the loved ones around you. And when you have your loved ones around you, when you're dying, your view of them is going to be different. Me and Maharaj have somebody that we were speaking to, and they're dying right now. And it's just like, the love for that person is coming through. And it's a different stage. I think it's a long answer, but I hope that answers your question. Sorry, you didn't interrupt. Sorry. I was in the flow, ऐसा जो प्रेम है ये बाइनरी, यानी कि होता है या नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि होता है या नहीं होता है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा किसी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तो उनके साथ जब हम अपना जीवन बिताते रहते हैं तो बहुत सारे हमारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियों में हमारा जो प्रेम है वो धीरे धीरे क्रमिक स्तर पर बढ़ता रहता है। तो जैसे कि अगर हम उदाहरण लें, अगर कोई जो विवाहित जोड़ है उसका 1 साल तक जो उनका संबंध है या फिर 50 साल तक संबंध है, उसमें बहुत ही अंतर रहता है। तो ये जो प्रेम है, जैसे कि अगर हम कृष्ण के प्रति भी हमारा जो प्रेम है, ये एक तरह से पूरा सार्वभौम स्तर का प्रेम है। लेकिन हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि अगर हम पहले ही दिन मंदिर आए हमको पहले ही दिन कृष्ण से प्रेम हो गया। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ पे बैठे कक्षा दे सकते हैं। तो कृष्ण से भी प्रेम हमारा एक ही स्तर पे नहीं होता, धीरे धीरे वो प्रेम जो है ज्यादा से ज्यादा अनफोल्ड होता रहता है, खुलता रहता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि कृष्ण हमारा जीवन भी बन गए हैं। तो इस प्रकार से प्रेम का विकास होता रहता है। ये तुरंत ही किसी भी क्षण नहीं होता रहता है। आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि लोग शादी कर रहे हैं, वैसे पश्चिमी देशों में लोग ज्यादा शादी भी नहीं कर रहे हैं, अपना घर बार जल्दी छोड़ देते हैं, अपने मित्र अपना छोड़ देते हैं, पति पत्नी में आपस में जल्दी से तलाक हो जाता है। अभी IIT बाबा के बारे में हमने सुना, वो कहते हैं अपने माता पिता को ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो माता पिता के साथ भी प्रेम है वह धीरे धीरे क्रम दर क्रम बढ़ता रहता है। और ज्यादा से ज्यादा जब हम ऐसे अच्छे बुरे समय देखते रहते हैं तो प्रेम हमारा ऐसे मुश्किल समय में भी चलता रहता है। तो अगर हम लंबे समय तक जो हमारे संबंध है उनको देखें तो हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स भी होंगे, तो हमारा उनके साथ भी अच्छा संबंध हो सकता है। तो और अगर जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो अपना मृत्यु के समय पर है तो उसके प्रति जो हमारा प्रेम अचानक से विकसित हो जाता है। जैसे हम और महाराज किसी व्यक्ति के साथ थे और हमें पता चला कि वो मरने वाले हैं, तो उनके प्रति हमें स्वाभाविक रूप से प्रेम आ गया। Any more questions? Hare Krishna, Prabhuji. Actually, that was a great class to understand how we can develop our love and everything. Sometimes we feel that we really love Krishna. Like, I feel, this is personally for me, that I feel that I really love Krishna, I want to remember him constantly. But practically sometimes I couldn't do it, because what happens is, like, due to modes of material nature, I have to deal with many things in my life, like family, work, and personal, professional, everything I have to deal with. So at that point of time, I feel when I'm stuck somewhere, I feel that I don't really love Krishna. I'm losing him. I'm just giving an what we can say. I just give a false commitment that I love him, but I really don't feel that I really love him. Because when I'm stuck somewhere, I run for someone else. So
Prabhuji, please help me in that how to get surrendered to him, how to be in that mood that yes, he's the one who is taking care of me. Well, if you say you love Krishna, but then when you're away from him, you forget him, then that is actually, your feelings are somewhat, what we say, sentimental. Because if you actually love Krishna, you won't forget him no matter what you're doing. And Prabhupada, or actually Sri Chaitanya Mahaprabhu gives an example how even when we do our material duties, we can keep our connection with Krishna. And he uses an analogy, a little antidote, where he says a wife is there, the husband is there. Now the wife has her duty to the husband, but she has a lover also. And even though she has a lover, she does her duty to her husband very nicely, so he doesn't suspect. But in her heart, she's always thinking, when can I be with my lover? So in the same way, we can do our material duties attentively, but in our heart, we're always thinking, I want to be with Krishna. I think of Krishna. I make plans to somehow or other take time to be with Krishna as much as I can. But at the same time, when I'm not with Krishna, I don't forget Krishna. Then that actually is a symptom of developing love. So it's like you take care of the material, but your consciousness is in Krishna. It's almost like a dichotomy, but that's how you live in this world. At the same time, you're not connected with the world, really. You're connected with Krishna. You're just doing what you have to do as a responsibility, that's all. Is that right? Yeah. We practice that. Remembering Krishna means to practice to remember Krishna. But hearing about Krishna, Shravanam Kirtanam, about Krishna, because Krishna is all attractive. His qualities are very attractive. His names, his forms, his pastimes, his qualities, his dealing with his devotees are all very, very attractive. So the more we hear about these, the more we get attracted to Krishna. Why? Because there's a thing called Purva-ras. Purva-ras means loving Krishna before meeting Krishna. When Krishna lifted Govardhan hill and he was holding it up, the young gopis hadn't seen Krishna. They were so young that they had heard about Krishna. And hearing about Krishna, they had developed some love for Krishna. But when Krishna was holding up Govardhan hill, all of the inhabitants, including these young little gopis, they also came. And their desire was fulfilled, and they simply absorbed themselves in looking at Krishna the whole 7 days. So that's an example of Purva-ras. Okay, I'm sorry, I got carried away like I always do. लोगों का प्रश्न था कि हमको ऐसा लगता है कि हम कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा जो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं और ऐसे काम भी करना होता है, तो हम उसमें भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। तो ऐसा लगता है कि हमने भगवान के प्रति अपना भगवान को ऐसे झूठा ही वचन दे दिया कि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो महाराज उत्तर दे रहे हैं कि जो प्रेम होता है, अगर हम भगवान से दूर हैं और भगवान को भूल जाएं, तो इसका मतलब है हमारे भगवान के साथ भावुकता का संबंध है। प्रेम का मतलब है कि अगर आप भगवान से दूर भी हैं, तो आप किसी भी अवस्था में हैं, फिर भी आप भगवान को भूलेंगे नहीं। श्रील प्रभुपाद इसके लिए उदाहरण दिया करते थे कि आप जैसे कोई इस दुनिया में भी अपना कोई आपका जिम्मेदारी है, उसका आप काम करते रहें, फिर भी आप भगवान के साथ संबंध बना दे सकते हैं। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं, जैसे कोई एक पत्नी है, उसका पति है, वो और उसके साथ ही उसका कोई अन्य प्रेमी भी है, तो वो जो पत्नी है वो अपने पति के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी को इतनी अच्छे से करती है कि उसका पति को उस पर किसी भी प्रकार का संशय या संदेह नहीं होता, और अंदर ही अंदर वो सदैव अपने प्रेमी से मिलने की कामना करती रहती है। तो इसी प्रकार से हम अपनी जो इस दुनिया में जिम्मेदारी है उसको इस प्रकार से कर सके कि हमारा जो हृदय है वो सदैव कृष्ण के लिए है, और इस प्रकार से हम कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से अगर हम
कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे तो हम इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया के साथ संबंधित नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक कर सकते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए। और भगवान को स्मरण करते हुए कोई भी सेवा करने का अर्थ ये है कि भगवान को स्मरण करने का प्रयास करना। तो भगवान को स्मरण करने का प्रयास करने के लिए श्रवणम कीर्तनम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण है वो सर्व आकर्षक है। तो भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो उनके नाम रूप गुण क्रियाएं उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान के साथ हम आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए जो श्रवण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस संबंध में एक हम कहते हैं कि पूर्व रस है। पूर्व रस का अर्थ है कि यानी कि जब अपने प्रेमी से मिले हो उसके पहले ही आपको जो आभास होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए जो 9 युवती गोपियां थी जिन्होंने कभी कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कृष्ण के बारे में सुन रखा था, तो सुन के उन्होंने प्रेम का विकास कर दिया था। और जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो वे सभी आई और उस समय उन्होंने 7 दिनों तक भगवान का दर्शन किया। तो इस प्रकार से श्रवण के माध्यम से भगवान से प्रेम विकसित कर सके। So love for Krishna is different than the love that we exchange in this world. तो कृष्ण के साथ जो प्रेम है वह अलग है जो इस भौतिक जगत में हम। And as Raj Mukunda Prabhu showed very nicely the different stages of how love develops spiritually and how love apparently plays itself in a material sense. जैसे कि राज मुकुंद प्रभु ने बहुत ही अच्छे से दिखाया कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही परिप्रेक्ष्य में प्रेम किस प्रकार से क्रमिक विकास करता है। But the difference, one fundamental difference between the two is that love for Krishna is already there within your heart. लेकिन दोनों में जो मूलभूत अंतर ये है कि जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो आपके हृदय में पहले से ही है। But love in any other sense has to start from a certain premise and then develop. और किसी दूसरे संबंध में आपको प्रेम करने के लिए उसको विकास करना पड़ेगा। But we don't have to worry about loving others. लेकिन हमें दूसरे के बारे में प्रेम करने की चिंता करनी नहीं है। Because Krishna is called Mula, क्योंकि कृष्ण को मूल कहते हैं, which means root. इसका मतलब है जड़। So he's the foundation of all existence. अगर वो सारे अस्तित्व की जड़ है। So whatever you direct at Krishna, you're actually directing outwardly towards all other living entities. तो जब आप कृष्ण के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो यानी कि आप सारे जीवों के लिए कर ही रहे हैं। Just like Christ said, whatever you do to the least in my kingdom, you do unto me also. तो जैसे कि क्राइस्ट कहते थे कि आप मेरे राज्य के लिए जो भी कर रहे हो वो मेरे लिए कर रहे हो। So that works both ways. तो ये दोनों तरफ से काम करता है। So developing love for Krishna means awakening love for Krishna. तो कृष्ण के प्रति प्रेम का विकास का मतलब है उस प्रेम को जागृत करना। As the verse says, Nitya Siddha Krishna Prema Saru Kabunoi Sravanadi Siddhi Chitte Kori E Udoi. In the hearts of all living entities, pure love for the Supreme Lord is already there. It's just covered by our activities in the material world, that's all. तो सभी जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम पहले से ही है, बस वो खाली हमारे जो भौतिक जीवन में कार्यकलाप है उसके कारण आच्छादित हो गया है। But the different stages that Raj Mukund showed on the spiritual platform is a way that we can awaken that love in a natural way. लेकिन राज मुकुंद प्रभु ने जो स्लाइड के माध्यम से दिखाया है कि हम आध्यात्मिक तरीके से किस प्रकार से प्रेम को जागृत कर सकते हैं। Because love is there. It's just hidden. सिर्फ वो छुप गया है। There's an understanding. Everyone's looking for Krishna. Everyone's looking for love. Everyone's looking for Krishna. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी लोग प्रेम की तलाश में हैं, सभी लोग कृष्ण की तलाश में हैं। That's the whole world ultimately is looking for love, but they take this desire and they direct it in different ways, and they call it love or some type of attachment. But all it is just some diversion from the essence. Real love means Krishna. तो वैसे सब लोग प्रेम की खोज में हैं, लेकिन वो जो अपने प्रेम को अपने अलग-अलग आसक्तियों की ओर उसको पथभ्रष्ट कर देते हैं, लेकिन वास्तव में सब भगवान की तरफ है। And love means to sacrifice. और प्रेम का अर्थ है कि त्याग बलिदान। Without sacrifice, there's no love. अगर आप त्याग नहीं करते तो यानी कि प्रेम नहीं करते। Because in order to show love, you have to somehow or other give up what you like
in order to benefit and serve those that you're trying to offer love to. तो आप जिसको भी प्रेम करना चाहते हैं उनके लिए आपको कुछ अपने त्याग कुछ आपकी जो प्रिय वस्तु है उसको छोड़ना पड़ेगा। We have the example of the gopis, उदाहरण गोपियाँ, which is the epitome of all loving relationships to the Lord. It's a perfectional stage of love. जो कि प्रेम की पराकाष्ठा है भगवान के साथ सभी संबंधों में। And there's one beautiful pastime story एक बहुत ही सुंदर लीला है where Krishna's in the spiritual world and Narada Muni comes to see him. जहाँ भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत में नारद मुनि इनको देखने आते हैं। And Narada says to Krishna, "How are you?" और नारद मुनि भगवान से पूछते हैं कि आप कैसे हैं? Krishna says, "I have a headache." कृष्ण बोलते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है। Narada gets very concerned. आपको चिंता हो जाती है। Oh, what can we do to relieve your headache? ओ हम आपको क्या कर सकते हैं कि आपका सिर दर्द दूर हो जाए? Krishna says there's only one medicine. केवल एक ही औषधि है। The dust of the feet of my devotees on my head will relieve my headache. कि आप मेरे भक्तों की जो पद की धूली है उसको मेरे सिर पे लगा दो मेरा सिर दर्द दूर हो So जाएगा। Narada is thinking, what devotee is going to give his foot dust for Krishna's head? तो नारद मुनि सोचते हैं कि भरत ऐसा कौन सा भक्त है जो कृष्ण के सिर पर धूली लगाने को देगा? He's thinking it's impossible. ये तो असंभव है। So Krishna says, you go out and see what you can find. तो कृष्ण कहते हैं आप जाओ देखो कहाँ मिलता है। So he goes to the sages of Dandakaranya, तो जाते हैं दंडकारण्य ऋषियों के पास, the ones that associated with Lord Ram. उनमें से जो कि राम भगवान के पार्षद They थे। saw Narada. वो नारद मुनि का दर्शन करते हैं। Oh, Narada Muni, ओ नारद मुनि you came. आप आ गए। And then they know that Narada, he visits Krishna regular. So they said, well, how is Krishna? और उनको पता है कि नारद मुनि हमेशा कृष्ण के पास जाते रहते हैं, तो पूछते हैं कृष्ण कैसे हैं? Well, that's why I've come. He has a headache. तो अरे इसीलिए तो आया हूँ कि उनके सिर में दर्द है। Oh, is there something we can do? अरे हम क्या कुछ कर सकते हैं? Yes, I came to ask you because Krishna says only the dust of his feet of his devotees can relieve his headache. हाँ इसीलिए मैं आपके पास है क्योंकि कृष्ण कहे कि सिर्फ उनके भक्तों के चरण की धूली से ही उनका सिर दर्द ठीक हो सकता है। So please give me your foot dust and I'll bring it to Krishna. आप अपने चरणों के धूल दे दीजिए, हम इसको कृष्ण को देंगे। Narada, what are you asking? अरे नारद मुनि आप क्या पूछ रहे हैं? Don't you know what will happen to us? आपको मालूम नहीं इससे हमारा क्या If होगा? we put our foot dust on Krishna's head, we'll go to hell. अगर हमारे चरणों की धूल कृष्ण के सिर पर लग गई तो हम नरक जाएंगे। Don't ask again. दोबारा नहीं मांगिएगा। So Narada saw it was impossible. तो नारद ने सोचे असंभव है। And he went to other devotees. They gave the same experience, same results. तो और दूसरे भक्तों के पास भी है, तो दोनों ने उन्होंने They came back. Narada said, I couldn't find anybody. तो नारद मुनि वापस आ गए, बोले कि मुझे तो कोई भी नहीं मिला। Krishna says, go to Vrindavan and ask the gopis. कृष्ण ने कहा वृंदावन जाओ गोपियों से मांगो। So he came. उन्होंने आए, वो आए। Narada was a little curious. What is it about the gopis that's so special? नारद थोड़ा जिज्ञासु थे, उत्सुक थे कि गोपियों में क्या विशेष है। And they saw Narada. उन्होंने नारद मुनि Oh, Narada, you come. अरे नारद मुनि आप आ गए। Wow, how's Krishna? कृष्ण कैसे हैं? Well, I was just with Krishna. Oh, tell us about Krishna. अरे मैं अभी कृष्ण के साथ था, बताइए। They कृष्ण want to के hear बारे about anything about Krishna. में। कृष्ण पर हम कुछ भी बताइए। He said, actually, he has a headache. अरे उनको सिर में दर्द हो रहा है। Oh, really? Well, what can we do to relieve his headache? अच्छा सच में उनका सिर दर्द हम कैसे दूर कर सकते हैं? Well, that's why I came. अरे इसलिए तो मैं आया हूँ। He said, only the dust from your lotus feet can relieve his headache. So please give me your foot dust. उन्होंने कहा कि सिर्फ आपके चरण कमलों की धूली ही उनके सिर दर्द को दूर कर सकती है, अपने चरण धूली So दीजिए। they start taking off their bangles and scraping the dust from the feet. तो अपनी They चूड़ियां were उतार- making big piles. अपनी चूड़ियां उतार कर अपने चरणों की धूल इकट्ठा करके उसका ढेर बना दिया। And then Narada's watching. और नारद मुनि देख रहे हैं। Gopis are saying, come on, Narada, hurry up. Take the dust. Krishna's got a headache. और गोपियां कह रही हैं कि अरे Don't नारद मुनि waste जल्दी time. करो, समय मत बर्बाद करो, ले जाओ इतनी सारी धूल। Then Narada says, well, don't you know what will happen? You'll go to hell if you put your foot dust on Krishna's head. नारद मुनि कहते हैं कि आपको पता नहीं कि आप नरक जाओगी अगर आप अपने चरण की धूल कृष्ण के सिर पर लगाओगी। They said, we'll go to hell forever if it relieves Krishna's headache for one moment. हम जिंदगी भर के लिए नरक में रह सकते हैं अगर एक क्षण के लिए भी हम कृष्ण के सिर का दर्द दूर कर सकें। Narada was shocked. नारद मुनि अचंभित Then he could understand what is real love. तो समझिए कि ये वास्तविक प्रेम Real love is selfless.
जो doesn't even consider one's own welfare in order to serve or give love to the beloved. तो जो ये शुद्ध प्रेम है वह निस्वार्थ होता है, जो सामने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना चाहता है. Do we find that in the material world? क्या ऐसा भौतिक जगत में मिलता है? To some small degree we do. एक छोटे अंश में मिलता है. And Prabhupada made that point. He said the love that a mother has for the baby is selfless. श्रील प्रभुपाद ने कहा कि माता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वह निस्वार्थ The baby होता है. can't reciprocate the mother's love, but the mother keeps giving. She gives up her sleep. She changes the diapers. The baby cries when she's trying to, and the baby may cause so many difficulties for the mother, but for the mother, that's love. जो बच्चा होता है वो माँ को कुछ नहीं देता, लेकिन बच्चे के लिए माँ कितना कुछ करती है, नींद छोड़ देती है, उसका डायपर बदलती है, तो इतनी सारी समस्याएं सहती है, सिर्फ बच्चों को खुश. She doesn't consider, oh, this is difficult. She thinks, this is what I do. I serve my child because of my love for my child. Yeah. तो जो माता है इसको किसी समस्याओं के रूप में नहीं लेती, वो सोचती है कि मुझे अपने बच्चे की सेवा करनी है. That's the closest thing to real love in the actual sense of love. जो वास्तविक प्रेम है उससे सबसे निकटतम. But then Prabhupada says the mother also may be thinking when the baby grows up he'll get a good job and they'll give me some money. प्रभुपाद लेकिन आगे ये भी कहते हैं कि माता ये भी सोचती रहती है कि बच्चा बड़ा जाएगा, नौकरी करेगा तो मुझे पैसा देगा. So I should make sure he gets everything he needs all the way through life. तो इसीलिए Because when I retire he'll give me some of his paychecks. So then there's always some motivation there. इसलिए माता में भी कुछ ना कुछ हमेशा इच्छा रहती है. But so love for Krishna is like that. It's selfless. तो कृष्ण के लिए जो प्रेम होता है इस प्रकार से निस्वार्थ होता है. To whatever degree we can show love, that is appreciated by Krishna. Therefore, Krishna will reciprocate according to how much we show love. And love means to serve. जितना अधिक हम कृष्ण के प्रति अपना प्रेम अर्पित कर सके, उसी मात्रा में कृष्ण हमारे साथ आदान To प्रदान put everything else aside and serve the Lord with the desire to please the Lord. How do we do that? When we follow the instructions of our spiritual master. No matter how difficult it may be, it's an expression of our sacrifice in order to serve the Lord. तो हम कितने अंश तक कृष्ण को बिना किसी इच्छाओं के, अन्य इच्छाओं की हम सेवा करना चाहते हैं, इस प्रकार से पता चलता है कि हम कितनी निष्ठा से अपने गुरु के निर्देशों को पालन करना चाह रहे हैं. इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें उन निर्देशों का पालन करने के लिए कितनी समस्याएं. This is a very deep subject. ये बहुत ही गहन मुद्दा है. Because in spiritual love there is two aspects to it. क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रेम के दो हिस्से होते हैं. Loving in separation and loving in meeting. कि जो विप्रलंब भाव में प्रेम और संभोग में प्रेम. You might say, well, how can we love in separation unless first there's love in meeting? आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ साथ में रहने पे ही प्रेम हो सकता है, विप्रलंब भाव में प्रेम कहाँ होता है? When we learn about the qualities, when we learn about the characteristics of the person we're trying to love, then when that person leaves our life, the love is still there and it becomes even stronger because of feelings of separation. तो जब हम अपने प्रेमी के गुण, उनके चरित्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, जानते हैं, तो यदि वो हमको छोड़ के चले भी जाते हैं तो प्रेम बना रहता है, बल्कि वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है. But Krishna is different. लेकिन जो कृष्ण है वो थोड़ा अलग है. Because the love is already there, it's just hidden. कृष्ण प्रेम आपके लिए पहले से ही है, बस कहीं वो छुपा हुआ है. As I used the example of the young gopis, they didn't even meet Krishna, but they were loving Krishna because love for Krishna is in the heart already. It just has to come out. मैंने उदाहरण दिया था कि जो नौ युवती गोपियां थी, उन्होंने कृष्ण को पहले से कभी नहीं मिली थी, लेकिन फिर उनके हृदय में प्रेम पहले से था. And Braj very nicely described the different characteristics of how love is manifested and shown in our spiritual practice. और राजमुकुंद ने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से जो प्रेम है वो क्रमिक दर से हमारे आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से बढ़ता जाता है. And when love becomes complete, then one cannot think of anything else
but the beloved. और जब ये प्रेम अपनी पूर्ण अवस्था पे पहुंच जाता है तो वह अपने प्रेमी के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता. And that comes by serving Krishna with devotion. और यह कृष्ण को भक्ति के माध्यम से सेवा करने से प्रकट होता है. How to please Krishna. और कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें. And let me do whatever I can. And because the devotee, when the devotee tries in a very simplified way to serve the Lord, they get so many ideas how they can express their same love in different ways. And then their whole life becomes just thinking in different ways how they can serve the Lord and please the Lord. It becomes a creative experience. तो अगर भक्त एकदम सरल भाव से ये सोचता है कि वह कृष्ण को किस प्रकार से प्रेम करता है तो भगवान से इतने सारे विचार देते हैं इतने कि वह अपने प्रेम को बहुत ही अनेक प्रकार से विकसित कर सके. So when we're seeing the deity, we don't ask anything for Krishna. We just ask, how can I serve you? तो जब भगवान का दर्शन करते तो हम उनसे कुछ मांगते नहीं, हम उनसे सिर्फ ये बोलते हैं कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकें. Sometimes we see people, they go before the deity. They're like this, you know. क्योंकि हम देखते हैं तो भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के. And if you look at them, they're thinking, Dehi. आप उनको देख के समझ जाते हैं कि वो लोग भगवान से कह रहे हैं देही. Bhagavan, you have everything and I have nothing. So share a little bit. भगवान आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, आपका कुछ बटवा. Dehi janam, dehi dhanam, dehi yasod, dehi rupam, dehi. Rupam dehi, dhanam dehi, yasho dehi. But that's not love, that's business. लेकिन ये प्रेम नहीं, ये व्यापार है. I give you a prayer, that's my currency, and you give me something back. That's the merchandise. तो ये व्यापार है कि मैं अपना जो प्रेम है वो मुद्रा के रूप में दे रहा हूँ और उसके बदले में आप मुझे कुछ दीजिए. So if we practice that mood with Krishna, it'll come out naturally because it's already there in the heart. तो अगर हम ये भक्ति का जो अभ्यास है करें तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर प्रकाश हो जाएगा क्योंकि ये पहले से ही है. And there's one quality about Krishna that is so wonderful. कृष्ण का एक गुण है वो इतना अद्भुत है. Bhagavatam makes this point and shows that one of the qualities of Krishna, or the outstanding quality of Krishna that attracts devotees to Krishna, is his kindness. तो भगवान कृष्ण का जो एक अत्यंत उत्कृष्ट गुण है जो भक्तों को आकर्षित करता है वह उनका दयालुता. How does he show his kindness to his devotee? वह भक्तों के प्रति अपनी दया किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं. He asks his devotee to do some service. कि वो अपने भक्तों से कहते हैं कि ये सेवा करो. Either through the spiritual master or through dreams or through some avenue, he requests that devotee, can you serve me in this way? तो उस भक्त को गुरु के माध्यम से या फिर सपनों के माध्यम से कुछ बताते हैं कि आप ये सेवा करो. And the devotee gets inspired and starts to serve. और भक्त को प्रेरणा मिलती है और सेवा चालू कर देता है. And the service becomes very nice. और सेवा बहुत अच्छे से होने लगती है. And the devotee gets all the credit. और फिर भक्त को सारा श्रेय मिल जाता है. Devotee, Krishna gives the inspiration. जहाँ हम देखें कृष्ण ने प्रेरणा दिया. Gives the intelligence. बुद्धि दिया. He says, I'm the intelligence of the intelligent. भगवान कहते हैं मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ. He gives the facility. उन्होंने सारी सुविधाएं दी. He gives the direction. उन्होंने दिशा निर्देश दिए. And he also gives the result. उन्होंने ही परिणाम दिया. And the devotee gets all the credit. लेकिन जो भक्त उसको सारा श्रेय मिल जाता है. That's Krishna. ये कृष्ण है. Prabhupada said, when someone asked Prabhupada, श्रील प्रभुपाद ने कहा जब किसी ने उनसे पूछा, Srila Prabhupada, Lord Chaitanya spread Krishna consciousness all over India. श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार He किया. did. He did for 18 years. He traveled all over India spreading the Sankirtan. 18 साल वो पूरा भारत भर भ्रमण करते रहे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हुए. And then the devotee asked Prabhupada, why didn't he just take it around the world? He was God. He could have did it. तो भक्तों ने पूछा कि उन लोग पूरी दुनिया में कहीं प्रचार करनी हो भगवान से कर सकते थे. And Prabhupada said, he left it for me to do. उन्होंने मुझे करने के लिए छोड़ दिया. So Krishna is like, he can do anything and everything, but he likes to empower his devotees to do things. The devotee does something wonderful,
And Krishna gives him the credit. Although he's the force and the success behind everything. कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को जो है, भक्त कुछ करते हैं तो भक्तों को अपना सारा श्रेय देना चाहते हैं. So we were talking at the very beginning about gratitude. तो प्रारंभ में कृतज्ञता के बारे में चर्चा कर रहे थे. To see how grateful we've been given so much by Krishna, and what is our qualification? His mercy. That's all. हम देखते हैं कि भगवान ने हमको कितना कुछ दिया है और हमारी योग्यता क्या है, वो सिर्फ कृष्ण की कृपा. Or the mercy of his representative, which is also his mercy. और भगवान के प्रतिनिधियों की कृपा भी भगवान की ही कृपा है. So when we know how much Krishna is giving to us, we also think, I should give more, try to give more to Krishna. There's a sense of gratitude that comes in that way. हम ये सोचते हैं कि भगवान हमको कितना कुछ दे रहे हैं, तो हमारे में भी भावना आती है कि हम उनको वापस कुछ दें, तो इसको कृतज्ञता कहते हैं. And that inspires the devotee to serve the Lord and to also accept difficulties on behalf of serving the Lord. इससे भक्त को भगवान की सेवा करने की और उनकी भगवान की तरफ से समस्याओं को सहने की, कष्ट झेलने की शक्ति मिलती है. Krishna is loving us more than we can possibly imagine. तो कृष्ण हमको इतना प्रेम करते हैं जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते. As Prabhupada said, he's the best in every category, so his love is also the best. प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण सभी श्रेणियों में सबसे अच्छे हैं, तो उनका जो प्रेम है वो भी सबसे ज्यादा है. But what is he asking? As was pointed out, he's asking patram pushram phalam toyam yome bhakti. Just, it's not so many what you offer, is offer with desire to please me. That's all. और बदले में भगवान मांगते क्या है? बस खाली पत्रम पुष्पम फलम तोयम. तो वस्तु की नहीं, बस खाली वो बोलते हैं कि आप हमको प्रेम के साथ अर्पित कर दो. Pretty purvakam, with love. So loving Krishna is easy. Loving people in this world is love pretty hard. Can be. कृष्ण से प्रेम करना बहुत ही सरल है, लेकिन दुनिया के लोगों को प्रेम करना बहुत. That's why we compromise the whole principle of love, and it's called lust. It's not. हम प्रेम को पूरा दरकिनार कर देते हैं, उसको फिर काम कहा जाता है. What can you give me? I'll give you something if you give me something, and that's the deal, right? तो उस समय काम में ये भावना रहती है, मैं तुमको ये दे रहा हूँ, तुम बदले में मुझको ये सामान दे. But that's not love, that's business. तो ये व्यापार होते हैं. Mataji. हरे कृष्ण महाराज जी ने भी इतनी सारी क्वालिटी बताई भगवान के बारे में, जो एक व्यक्ति में सबका प्रशंसा हमको करना चाहिए, लेकिन जो एक भाव भक्तों के प्रति रहता है वो भाव भगवान के प्रति नहीं आता है. जैसे भक्तों का कभी जन्मदिन रहता है, वो एप्रिशिएट करते हैं, कुछ उसके साथ उन्होंने जरा सा भी किया तो उनके लिए हम बहुत ग्रेटफुल रहते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं उनके साथ. तो जो भक्तों के प्रति वो भगवान के प्रति नहीं आता है, तो इसको कैसे भगवान के मानती हूँ क्या भगवान सब कुछ कर रहे हैं, भगवान बहुत कुछ दे रहे हैं, दयालु है, कृपा, फिर भी वो प्रेम की भावना नहीं आती जो भक्तों की आती भगवान. The question is that you told that Krishna has so many nice qualities, like he is very kind, he has so much gratitude and all these things. So, but I find that I develop these qualities for devotees, but I cannot relate these qualities with Krishna. That I can, for example, whenever a devotee has a birthday, I wish him, I glorify him. But when it is for Krishna, I just don't relate it so much. Well, we'll both answer the question. I will say, Prabhupada would say, nobody can do anything good for anyone unless Krishna allows that person to do something good for that person. प्रभुपाद कहते थे कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता जब तक कृष्ण उसको वह काम करने की अनुमति ना दे. Krishna is in the heart of all living entities. कृष्ण सभी जीवों के हृदय में है. So if he allows one to reciprocate with another person, that means he wants that to happen. That's actually his, what we call permissive will. He allows this relationship to develop.
तो यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ संबंध बनाकर आदान प्रदान करता है तो यानी कि वो कृष्ण की अनुमति के कारण ही करता है. Because he tries to see what is the best for each and every person. क्योंकि कृष्ण ये जानते हैं कि सभी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा क्या है. Even sometimes he acts on the material world कभी-कभी वो भौतिक स्तर पर भी काम करते हैं. just to please the devotee. सिर्फ अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए. So, but behind everything is Krishna. लेकिन सभी चीजों के पृष्ठभूमि में कृष्ण है. He is what is called, there's two kinds of causes. There is called the initial cause and the remote cause. तो दो तरह के कारण होते हैं. एक होता है The initial cause is what you see, is the material exchange that is being played. तो इनिशियल जो कारण होता है उसको हम कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं. And the remote cause is Krishna is behind everything, making it happen or not happen. और जो दूर का कारण है वो ये कि कृष्ण सब कुछ ये करता है. We can't see Krishna, but we know through knowledge, through Shastra, through Guru, that behind everything is the hand of God. तो शास्त्र और गुरु के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि सारे कारणों के कारण भगवान है. He says this material energy works under my direction. भगवान कहते हैं भौतिक शक्ति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है. And whatever he wants to happen will happen, and whatever he doesn't want to happen, you can't make it happen no matter how hard you try. तो भगवान जो चाहते हैं वो हो जाता है और जो नहीं चाहते हैं आप कितना भी कुछ करो नहीं होगा. But he gives you your free will. लेकिन फिर भी वो आपको अपनी स्वतंत्र इच्छा देते हैं. But behind everything is Krishna. Therefore, when someone does something wonderful for us, we appreciate that person, we thank that person, but we know that Krishna inspired that person within the heart. तो भगवान अगर हमारी कोई भी कुछ अच्छा करता है तो हम उस व्यक्ति की सराहना करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कृष्ण ने उस व्यक्ति को प्रेरणा दी जिससे वो हमारे लिए अच्छा किया. Okay, would you like to continue with that point? think you covered. Yeah. Does it answer your question? आपको उत्तर मिल गया? Sure. Is okay? Well, let's take another question for Raj. और वो माता जी कुछ Question there? हाँ पूछिए. हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान से हमारा जो प्रेम होता है, अगर हम उसमें मतलब कोई डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, वो हमारी मतलब भोग की इच्छा है. और फिर मेरा एक कंक्लूजन है कि भगवान ही तो हमारे पिता की जैसे हैं, हमारे पिता ही है वो, मतलब एक्चुअल पिता तो वही है हमारे. तो फिर अब जो भौतिक जगत में जैसे कुछ परेशानियाँ आती है, तो जैसे छोटा बच्चा अपने पिता को जाके बोलता है या अपनी माता को ये ठीक कर दो, मुझे कुछ नहीं पता ऐसा. और मुझे पता है कि भगवान तो हमारी भलाई का ही करेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है भगवान ये आप क्यों नहीं कर रहे हो, एक सवाल आ जाता है, मतलब कि तो और हम भगवान से डिमांड नहीं करते. तो ये कितना गलत है और कहाँ तक सही है, या फिर इस बीच में और अपने लेवल को क्या सही करना चाहिए. The question is that if we demand something for Krishna, then we say that it is a kind of feeling that we are not loving Krishna. We are trying to enjoy Krishna, but Krishna is our father. So if we have some problems in this world, why we cannot ask from our father? Why we can't demand from them? So what is this kind of mentality? Yeah. And when you're in problems, why is it wrong to ask for things? Who's here played chess? The game chess. कौन शतरंज खेलना जानता है? Okay. So, when you play chess, usually good chess players think 1, 2, or 3 moves ahead. तो जो अच्छा चेस का खिलाड़ी होता है वो 1, 2, 3 ऐसे अपनी चाल चलता है, चाल आगे करके सोचते चलता है. But Krishna, he is the master chess player. जो कृष्ण है वो सबसे प्रमुख चेस प्लेयर है. So he is thinking 10 steps ahead. वो सबसे दक्ष हैं, वो 10 कदम आगे का सोच के चलते हैं.
So when we have problems or troubles in our life, जब हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, Krishna as already knows why them problems are coming. कृष्ण ये जानते हुए रहते हैं कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं. So we have to develop trust in Krishna. तो हमें भगवान में श्रद्धा और विश्वास विकसित करना है That Krishna, whatever you're doing for me is the best for me. कि कृष्ण आप मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे लिए सबसे अच्छा है. Maybe I can't see it right now, हो सकता है कि मैं इसको अभी समझ नहीं पाऊँ, but every time, if you look back in your life, and maybe everyone can think about this, every time there's been a difficulty, Krishna has somehow arranged for a reason for that difficulty to come, whether it be a lesson you need to learn, whether something good comes from it, whether something that you weren't aware of. So whatever problems that come in our life, we have to trust that it's something we're not seeing. And if you look back in your past, there would have been problems in your life that have now brought you to where you are, but has ended up for your own good. हाँ, तो आप अगर अपनी जिंदगी में पीछे देखें, अपनी जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं, आप ये सब इसको आजमा के देख सकते हैं, तो ऐसा आप समझेंगे कि भगवान कृष्ण ने आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें लाई हैं, वो आपको कुछ शिक्षा देने के लिए लाए रहे होंगे, या फिर इसलिए कि आपके जीवन में उससे कुछ अच्छा सीखने को मिले, या फिर आपको कोई चीज जो पहले मालूम नहीं रही होगी वो आप जान चुके रहेंगे. तो इसलिए आपको अपने में कृष्ण में विश्वास रखना चाहिए, जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो अंत में आपको अच्छा परिणाम ही देंगे. So I would change the prayer of, that prayer you're making to Krishna. Instead of saying, Krishna, help me, or Krishna, why are you doing this to me? To Krishna, what can I learn from this? Or what are you trying to teach me? तो आप जो प्रार्थना करती हैं उसमें मैं थोड़ा सा सुधार लाना चाहूंगी. आप भगवान से बोले कि भगवान मेरी सहायता करिए, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं. उससे अच्छा आप भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान इस समस्या से हमें क्या सीखने को मिलेगा, इसमें मुझे सहायता करिए. But don't lose hope, because you're praying to Krishna and you're doing the right thing. So keep praying to Krishna, and it's a journey. It takes time, and it's okay. You're still praying to Krishna. That's really important. तो आप लेकिन अपनी आशा नहीं छोड़िए, कृष्ण से प्रार्थना करती रहिए, क्योंकि ये यात्रा है और फिर आपको ये थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप कृष्ण से प्रार्थना जारी रखिए. Because like Nityananda Prabhu says, Krishna is your mother, Krishna is your father, Krishna is the ultimate wealth. So Nityananda Prabhu कहते हैं कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण. Prashna? मेरे साथ कभी-कभी ऐसा हुआ है कि मैंने जो भगवान से डिमांड किया है, उन्होंने वो पूरा भी किया है. फिर मैं जब शुरू में आई थी भक्ति में, तो फिर मुझे ये लगता है कि भगवान ने गुस्सा होगी तो नहीं वो पूरा कर दिया, और मुझे बाद में सजम मिल रही है, मतलब इस तरह का भी लगता है. Sometimes it has happened with me that in the initial days when I prayed to the Lord, He fulfilled my demands. So sometimes I think that the Lord fulfilled my desires because He was angry with me, and now He's giving me punishment. See, Krishna? Yeah. It's a unique relationship you have with Krishna. Maybe it's Shiva. Sometimes we really don't know what's best for us, and this is the point. This is why we have a guru in our life. This is why we have seniors in our life, because we have to understand our vision is sometimes not as advanced, or our vision is sometimes limited to know what is best for us and what's not best for us. What should we be praying for and what we shouldn't be praying for? What should we ask for Krishna, what we shouldn't ask for Krishna? Therefore, it's really important that you take seniors, gurus, books, everything around you, because
right now what you think that's best for you may not be what's best for you. See, sometimes some prayers that aren't, see, we are thankful for the prayers that are answered, but often we don't thank Krishna for the prayers that he didn't answer. Right? Just think about the things that you wanted but that weren't good for you. Did you ever thank Krishna for not giving you them things? You know, because sometimes they would have been bad for you and they would have left you in a worse position. So sometimes we have to reflect and understand, actually, Krishna is your best friend. He is your ever well-wisher. He wants the best for you. So only when you have that love and trust, then you can really rely on Krishna. Say, Krishna, whatever you give me, whatever you do, I take, because you know what's best for me. And to manifest that, speak to gurus, speak to the people around you. They will have the vision. They will have the foresight that can help you, that spiritual foresight, that jnana, that knowledge of actually what is really good for me. You know, sometimes we don't have it. So, I would say, trust him. Yeah, think about that. It's very important. So it's a little dangerous to ask Krishna for something because you don't really know if you're asking for something that is going to be beneficial. Best thing to ask is for service, and by service everything will be understood. ऐसा हो सकता है कि भगवान कृष्ण का आपके साथ बहुत ही अच्छा संबंध है। महाराज ने कहा कि हो सकता है आपने कृष्ण से शिव से प्रार्थना कर लिया होगा। तो वैसे हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होगा, तो इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा कि हम वरिष्ठ वैष्णव या फिर गुरु से हम जाके पूछ सके, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने वरिष्ठ वैष्णव गुरु या फिर हमारे पास जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, उनके पास जाएं, उनसे सीखें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। तो हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम भगवान को धन्यवाद देते हैं जिन प्रार्थनाओं का उत्तर दे देते हैं, लेकिन हम उन प्रार्थनाओं के लिए भगवान को कभी धन्यवाद नहीं देते जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया, और फिर हम उस पर कभी वापस मुड़ के भगवान को धन्यवाद भी नहीं करते कि भगवान अच्छा हुआ आपने नहीं पूरा किया, नहीं तो उससे हमारा कुछ बुरा ही हो जाता। तो हमें भगवान में यह पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वही हमारे सुहृद हैं, वही हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, और भगवान के साथ हमारा फिर प्रेम और विश्वास का संबंध होना चाहिए, और ऐसे हमारा भाव होना चाहिए, भगवान आप मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा ही है। तो इस विश्वास की भावना को बढ़ाने के लिए हमें गुरु से या फिर हमारे आसपास जो भक्त हैं उनसे बात करना चाहिए कि उनकी जो दृष्टि है वो उन्नत होती है, उनके पास वो ज्ञान होता है, वो हमको बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और ये महाराज ने कहा कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है कि अगर हम कृष्ण से कोई गलत चीज मांग ले, तो इसीलिए हमें सबसे अच्छा है कि हम भगवान से सेवा मांगे, और सेवा के माध्यम से हमें सब कुछ मिल जाता है। Good, thank you. मेरा क्वेश्चन था, जैसे ट्रांसजेंडर होते हैं क्या वो भी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की उनकी सेवा पाते हैं? Third genders, can they serve God? What is the question? Transgender, third gender, transgender people can serve God. Everyone is a spirit soul, and everyone has love for God. The body is superfluous. So, yeah, as long as they're in they have a human form, they can do some service for God. Animals can't serve God because they just don't have the ability and intelligence to understand. But humans, any form of human can serve God. Kiratahunam palinda pukasa ambira sambhav yavana kasyadaya. So the scriptures talk about those races that are really below the varnashram system. They have all abominable behavior. But if they connect with the pure devotee, then he can raise them to the platform of devotional service. तो जो ये तीसरा लिंग है वो भी
आध्यात्मिक स्कूलिंग की है, तो यह उद्देश्य पे निर्भर करता है। ये शरीर तो सिर्फ उद्देश्य के लिए मिला है। जब तक किसी के पास मनुष्य शरीर है, वो भगवान की सेवा कर सकता है। पशु भगवान की सेवा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी क्षमता नहीं होती, लेकिन अगर कोई भी मनुष्य शरीर में है तो वह भगवान की सेवा करता है। भागवतम में आता है कीड़ा प्रभु राम चरित्र, इस प्रकार से जो बहुत ही घिनौने स्वभाव वाले लोग भी हैं, वो भी जो कि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते, वो भी यदि शुद्ध भक्त का संग पाते हैं तो भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं। Okay, Mataji. I is it okay to love your guru than Krishna? Because sometimes, not sometimes, I always think that I want to go back to my Guru Maharaj. Even he is not in Godhead, but in another world. But is it okay to love Guru? Is it okay to? It is okay to love Guru than Krishna because I want to go to my Guru Maharaj. Even he may be traveling some other path, he may not be back to in Godhead. So I want to be with my Guru instead of being with Krishna. Yeah, there's no difference. कोई अंतर नहीं है। Yeah. One devotee, did you translate that in the local language, the question? तो माता जी ने प्रश्न पूछा कि ये ठीक होगा कि यदि मैं अपने गुरु से ज्यादा प्रेम करूं कृष्ण के बजाय, मेरे गुरु जहाँ भी होंगे, यदि वो भगवतधाम में अभी नहीं होंगे, किसी दूसरे भौतिक जगत में जाके प्रचार कर रहे होंगे, तो भी मैं अपने गुरु का ही संग प्राप्त करना चाहती हूँ भगवतधाम जाने के बजाय। तो क्या ये भावना सही है? तो महाराज ने कहा सही है। One devotee, he was one of the first devotees in our movement. His name was Hayagriva. He had a dream one night, and the next morning he told Prabhupada the dream. He said, Prabhupada, I had a dream. I was sitting on the chariot, and then Krishna was talking to me, and then Krishna turned into you. And then I said, when he asked for an explanation, Prabhupada said, that is very good. If you're seeing Krishna in the spiritual master, then you're actually seeing the spiritual master. So if you love the spiritual master, then you love Krishna, because what is the business of the spiritual master is to give you love for Krishna. So yeah, there are devotees who have a very deep and strong love for their spiritual master, but maybe not as strong as they have for Krishna, but actually there's no difference. So that is Krishna consciousness. तो हमारे आंदोलन में बहुत ही प्रारंभ के दिनों में एक भक्त थे श्रीपाद एग्री प्रभु, उनको एक दिन स्वप्न में आया। श्री प्रभुपाद से कहते, श्री प्रभुपाद मुझे स्वप्न आया, स्वप्न में एक रथ था, रथ में कृष्ण मुझसे बात कर रहे थे, और फिर थोड़ी देर में वो कृष्ण जो है आपके रूप में बदल गए। तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि यदि आप अपने गुरु के अंदर कृष्ण को देखते हैं। गुरु को प्रेम करने का अर्थ है कि आप कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का क्या ही काम है, गुरु आपको कृष्ण के लिए प्रेम ही देते हैं। तो हमारे आंदोलन में बहुत सारे ऐसे भक्त जिनका गुरु से बहुत ही ज्यादा गहन प्रेम है, लेकिन उतना उनका कृष्ण के प्रति प्रेम भी नहीं है, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है, यही कृष्ण भावना में है। So you said you would rather be where your Guru Maharaj is serving with him. So I'll tell you a story. Once I was with Chandramouli Swami, and we spent one day together. So from 7 a.m. till 9 p.m. And I had to take him to the dentist. We have this rasa where we go to the dentist together. It's really fun. So driving in London, and so we start the morning with breakfast. And the morning conversation is about what is your swarup. Okay, how do you find your swarup? It's pretty deep for 7 a.m., you know. And we're discussing, and Maharaj is giving me quotes of Shivaram Swami and the book he wrote, and how do you find your swarup, etc., etc. So that's how the day starts. And then throughout the day, we had a very nice program. I was traveling with Maharaj, went to the dentist. There was many accidents happening. There was a window smashed. We saw police cars.
And Maharaj and me are just looking at, oh, this is the material world, and Maharaj is giving me some nice knowledge. And then we continue, we go to a house program, and Maharaj has to name some deities. So he named them Dule Dule Gora Chand Nityananda Ram, I think. And it was the most spontaneous name, because he had another name. He had two names for them. He had one name, then he had another name, then he saw them, and then he was just like, actually, I want to name them this, because the song was on his mind. And then he gave initiation also. He gave 2 initiations. And we had Kirtan, and then there was a house program. We had Prasad. It was a really, really beautiful program. And obviously with Maharaj it was amazing. So there was jokes as well, and all these things. Then we went back to his place. We were just discussing program, pastimes. We helped him pack. And then we came to the end of the day. And I said to Maharaj, so we asked Maharaj, we said, Maharaj, what's your Swarup? And he's like, I'm not telling you. And then I said, Maharaj, what's my Swarup? And then he was saying some things, and then there's another devotee. And then we were just discussing, so Maharaj, what is the highest destination that we would want? Like going back to Godhead, is that the highest? Going back to Krishna, finding your Swarup? And Maharaj gave a point. And I was like, Maharaj, but what about Prabhupada? Like, maybe, what if we want to be Prabhupada, be with Prabhupada, or be where he is? And then Maharaj said, yeah, you can do that. So I said, Maharaj, what's the highest? Is it finding your Swarup and going back to Godhead, or is it being with Prabhupada and serving him? And it was so interesting because he smiled at me and he's like, kind of like, now you're getting it. And he quoted, and I've just pulled up the verse now. He quoted this particular lecture and this particular line Prabhupada gave. And he quotes this bhajan or line from a bhajan from Narottam Das Thakur. It was his appearance day this week, right? And Narottam Das Thakur, he sings, I'm going to try my best. Tandare charana seva bhakta sana vasa janama janame more e abhilasa. So Narottam Das Thakur says that birth after birth, because a devotee, he does not aspire after going back to Godhead, any place, it doesn't matter. He wants to simply glorify the Lord. That is his business. It is not the business of the bhakta that he is chanting and dancing and executing devotional service for going to Vaikuntha or Goloka Vrindavan. That is Krishna desires. If he likes, he'll take me. So he basically, Maharaj is making that point. Actually, our desire isn't to go back to Godhead. Our desire is simply to glorify Krishna. And if glorifying Krishna is with your guru, then that is the highest. And actually what we realized from that day, and what my realization from that day was, the highest place to be was with the devotees that day and the time I spent with Maharaj, because as devotees we were glorifying Krishna. So in one sense, you are in the spiritual world because you're with devotees, you're chanting, you're dancing, you're taking prasad. You're in the spiritual world, you're glorifying the Lord, you're with your guru. So really, we have to appreciate and value what we have right now. Right? What we have is so precious. It's so amazing because we are in the spiritual world glorifying the Lord, and people don't appreciate, like the devotees you're with, the activities you're doing. You're waking up morning, singing for Krishna, praising him, eating prasad, being with the devotees, serving your guru. That is the highest. So being with your guru is the highest thing also. When Guru Maharaj used to come here, it was actually a big festival for us. It was like Golok Vrindavan itself.
Yeah, just you don't want to be anywhere else. Everything becomes all the energy always in one place. Thank you. That's nice. You have a good memory. There's lots more stories of being with Maharaj. Maybe someday I'll share some funny stories also. If you think he's my disciple, he's not. He's actually a disciple of Radhanath Swami. Yeah, so, but... By Diksha, but Shiksha also. So we kind of hang around together. He helps me in so many ways, and I try to serve him usually by telling jokes. Any other questions? What is the time now? 9. Okay, so we'll do a little kirtan. Is that all right? Okay, kirtan. Okay.